Hello everyone, welcome back. Today I am here with this important topic of recombinant DNA technology, that is cloning vectors or cloning vehicles. Basically, cloning vectors are the mobile DNA elements which can carry the desired fragment of a gene or DNA inside the host cell for cloning it. तो जो ऐसा मोबाइल एलिमेंट होता है डीएनए का जो कि फॉरेन डीएनए को कैरी कर सकता है किसी भी होस्ट सेल के अंदर, लाइक वी हैव द सेल ऑफ ई कलाई जिसके अंदर वो डी उस जीन को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है, दैट मोबाइल एलिमेंट इज नोन एज वेक्टर. सो इन दिस प्रेजेंटेशन आई विल डिस्कस अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, देन व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर. Then we have different types of cloning vector, like cloning vector in E. coli. For example, we have plasmid, phagemids, bacteriophages, then BAC. Then we have vectors for plants, like we have TI plasmid and RI plasmid, and vectors for yeast cell, that is YAC vector, that is yeast artificial chromosome. So I will try to discuss about these vectors in detail one by one. Let's start. Firstly, vectors. So vector is basically a vehicle जो कि कैरी करता है एक फॉरेन डीएनए को इनसाइड द होस्ट सेल. सो दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जैसे कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि कैरी कर सकता है फॉरेन डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को, और इसे हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी होस्ट सेल के अंदर. सो दैट मोबाइल एलिमेंट इज नोन एज वेक्टर. डीएनए मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स एज ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल which carries foreign DNA and can stably maintains in a host cell, और इसे maintain करता है host cell में. Basically this is used to clone foreign DNA, जो desired fragment of DNA जिसकी हमें ज़रूरत है उस DNA के fragment को ये clone कर सकता है. Whereas expression vectors are also engineered so that insert gene that can be transcribed and translated into protein. So this is new advanced technique. बेसिकली जो वेक्टर होता है इसमें कुछ स्पेशल पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं, लाइक इट कंटेन्स वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. इट इज़ ओरी, जो कि एक प्रॉपर्टी है किसी भी वेक्टर की जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है, ऐसे सीक्वेंसेस को कहा जाता है ओरी. देन इट शुड कंटेन सम जेनेटिक मार्कर्स और सिलेक्टेबल मार्कर्स जो कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स में डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है. तो मोस्टली ये होती है कुछ genes like antibiotic resistant genes. Then it should contain promoter gene. Then there should be presence of some sites जहाँ पे हम desired fragment of DNA को insert कर सकते हैं, जहाँ पे restriction enzyme उसको cut कर सकते हैं, which are known as multiple cloning sites, जहाँ पे restriction enzyme cut करता है DNA को, और यहाँ पे हम desired fragment of DNA को insert कर सकते हैं. So these are some properties of cloning vector. So firstly, the first property, that is ability to replicate. So it should contain ORI, that is called origin of replication. So must have origin of replication. और ये जो origin of replication होता है, these are some specific sequences of DNA जहाँ से replication शुरू होती है. When foreign DNA is linked to the vector, जब इसमें foreign DNA को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, सो वेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देन अलॉन्ग विद वेक्टर रेप्लिकेशन फॉरेन डीएनए आल्सो स्टार्ट्स रेप्लिकेशन विद इन द होस्ट सेल. तो इसकी वजह से जो पूरा वेक्टर है वो रेप्लिकेट होता है, और इसके साथ ही जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो फॉरेन डीएनए का फ्रेगमेंट हमने इस पे ज्वाइन किया, वो भी इसके साथ रेप्लिकेट हो जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर इंसर्शनल क्लोनिंग. मीन्स जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो कहाँ से किसी वेक्टर को कट करेंगे, सो देयर शुड बी सम यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन द वेक्टर. So multiple cloning site, that is abbreviated as MCS, contains restriction sites for many enzymes which are not found somewhere else in the vector sequence. तो specific location में ये restriction sites present होती है जहाँ पे restriction enzyme इस vector को cut करते हैं और जहाँ पे हम जो gene of interest है उसे insert कर सकते हैं. So these restriction sites in MCS are first cleaved by restriction enzymes, and a target gene or the foreign DNA can be ligated into vector using DNA ligase. तो पहले यहाँ पे इस cloning restriction site पे या MCS, that is called multiple cloning site पे restriction enzyme इस vector को cut करते हैं, और यहाँ पे जो gap create होता है that is filled with this foreign DNA or desired fragment of DNA, and it is ligated with the help of enzyme which is known as DNA ligase, जो इसे ligate करता है इस vector के साथ. And this
whole structure become recombinant DNA. इसी को कहा जाता है recombinant DNA. Means vector plus desired fragment of DNA. So presence of multiple restriction sites allows convenient insertion and removal of single or multiple inserts from the same vector. So this is important to have multiple restriction sites ताकि जो बैक्टीरिया जो एंजाइम्स हैं वो इसको ईजिली कट कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन से और हम इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी दैट अ वेक्टर शुड कंटेन यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर इंसर्शनल क्लोनिंग. नेक्स्ट, a vector should contain a genetic marker. और जेनेटिक मार्कर बेसिकली होते हैं कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो कि प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होते हैं जो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को अगेंस्ट एंटीबायोटिक. सो जीन्स दैट कन्फर रेजिस्टेंस अगेंस्ट सिलेक्शन एजेंट अलाउ सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल. तो इसका जो मेन मोटिव होता है ये जीन्स हमें हेल्प करती हैं मार्क करने में जो सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गए हैं. Means that cell which contain foreign DNA or gene of interest as compared to those cells which does not contain, which are known as non-transformed cell. तो transformed cell और non-transformed cells में differentiation में help करती हैं ये genes जिसे बोलते हैं genetic marker. So very often resistance to an antibiotic is used as marker. तो जो genes resistance provide करती है against antibiotic उन्हें हम as a marker use करते हैं. Sometimes there may be two selectable markers present in a single vector. For example, we have one vector that is named as PACYC177. तो ये जो vector है इसमें दो genes होती हैं which provide resistance to the antibiotic. One is for amplicin resistant gene, एक antibiotic amplicin, then second is kanamycin. तो इन दो antibiotics के against ये resistance provide करता है. The next gene which are lethal, ऐसी जीन जो डेथ कॉज करती है होस्ट सेल की, these genes can also be used as a marker genes. तो in place of this lethal gene we can insert a desired fragment of DNA. So gene is disrupted during cloning insert. जब इसमें जीन को इंसर्ट किया था तो ये lethal gene disrupt हो जाती है and remain intact in the clones where insert has not been ligated. और ऐसे वेक्टर्स, ऐसे प्लाज्मिड जहाँ पे हमने फॉरेन डीएनए नहीं डाला है उसमें ये लिथल जीन इंटैक्ट रहती है, मीन्स फंक्शनल रहती है. सो वी कैन आइडेंटिफाई कि किस सेल में जो जीन है वो प्रेजेंट है. जो लिथल जीन प्रेजेंट होती है जिस सेल में वो सेल्स मर जाते हैं, दे डाई बिकॉज ऑफ दिस लिथल जीन, और जो सेल जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होती है दे सर्वाइव्ड. सो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं वो वैनिश आउट हो जाते हैं. दिस मीन्स लिथल जीन वुड किल अनट्रांसफॉर्म्ड सेल. तो ये किल करती है ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को, वेयर एज पॉजिटिव क्लोन्स वुड बी एबल टू सर्वाइव. फॉर एग्जांपल एक केस है यहाँ पे हमारे पास, दैट इज़ बार्नेज एंड PARE टॉक्सिन्स. तो ये जो एग्जांपल है ये है ऐसे मार्कर का जिसमें लिथल जीन प्रेजेंट होती है, दैट कैन एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर और जेनेटिक मार्कर फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स. The next important property of a vector is that it should contain minimum amount of non-essential DNA to optimize cloning. So जो vector है इसमें unused DNA बहुत कम होना चाहिए. This vector should be resistant to damage by shearing. It means कि जैसे इसमें endonuclease work करते हैं तो इसमें damage नहीं होना चाहिए and it should maintain its working capability. Then it should be very easy to isolate from host cell. इसे easily isolate कर पाएँ host cell से. So these are some properties. Then in addition to this it should have very low molecular weight. अगर इसका molecular weight कम होगा तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारी copies इसकी पाई जाएंगी. So we can multiply number of copies within a same cell. Then if it contain less amount of non-essential DNA, so there is less chance that the vector will have multiple sites for any restriction endonucleases. तो इसमें बहुत ज़्यादा restriction endonucleases की sites नहीं होंगी जिससे इसमें 1 or 2 restriction sites होंगी. So easily restriction endonucleases इसको यहाँ से cut करेंगे and we can insert the gene of interest in this particular portion. So this is very important property that a vector should contain. Next important property of a genetic cloning vehicle is presence of reporter gene. So this is basically to report
the transformed cells from non-transformed cell, means the cell which contain gene of interest and the cell which do not contain gene of interest. So this is the role of this reporter gene. So there are various genes which are used as reporter gene. For example, if we allow screening of positive clones by easy visual identifications, like we have blue or white screening, this is the easiest screening of transformed and non transformed cells. So जो bacterial colonies grow करती है petri dish में, हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं बाय विजुअलाइजेशन। तो इसमें जो ब्लू कलर की कॉलोनीज बनती हैं, ये ऐसी कॉलोनीज होती है बैक्टीरिया की जिसमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स नहीं होते। मींस ये जो बैक्टीरिया होते हैं, दे डू नॉट कंटेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं होता है। वाइल इन केस ऑफ वाइट कॉलोनीज, सो these bacteria कंटेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें वो जीन जो इंसर्ट की गई वो होती है। सो दीज आर ट्रांसफॉर्म्ड सेल बेसिकली. So with the help of this reporter gene, we can identify the transformed cells from non-transformed cells. For this screening, we use insertional inactivation of this gene, that is called ligase gene in case of E. coli. This is to identify the transformed cell basically due to expression of reporter gene in those cells. तो इसमें special genes present होती हैं जो कि identification में help करती है. For example, there is one chemical substance that is called X-cal. तो जब X-cal वाले chemical substance में इसे रखा जाता है, so they give different colors, that is blue and white color, which is easy for identification of transformed cells from non-transformed cells. Next important property is choice of host organism and cloning vector. So cloning vectors are species specific. So there are specialized cloning vectors for special host cell. So strains of bacterium, mostly that is Escherichia coli, is used as host organism. It is most preferably used host cell for cloning of desired fragment of DNA because it is easily available. Then it needs minimum equipments for growth and maintenance. तो E. coli को grow और maintain करना easy है. In addition to this E. coli have short life cycle. It can complete its life cycle within a few hours. Then flexible enough to transform using a diverse range of recombinant plasmids. तो इसे transform करना आसान है. We can add multiple types of recombinant DNA in the bacterial cell, and it can easily makes multiple copies of that desired fragment of DNA without any change in this cell. Then recombinant plasmids can be present in multiple copies inside the cell due to host chromosome independent replications. So this is very important property. जो इसका main DNA होता है बैक्टीरिया का, और जो vectors हैं basically plasmids हैं, ये एक दूसरे से independently replicate करते हैं, and this plasmid do not interfere with the normal replication of this DNA. So a single cell can contain multiple copies of plasmid or recombinant DNA. So multiple copies of desired fragment of DNA can be made inside a single cell. So this is again very important property of the cloning vector, that is host specificity. This was all about for our today's discussion about the properties of cloning vectors. Hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries, and any suggestions, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a nice time.